So what I will do today is I have got my note. I will explain my note, and from that note, actually, you study that note. ঠিক আছে, আর কিছু, you don't have to study anything else. So I think that would be a wiser strategy now the exam is coming, because energy flow I am laying more emphasis, because I think that there will be a question from this and from ecological succession. So let us actually, I'll share my screen. Okay, the screen is now shared. One 125 is the better thing. Let's make it a bit bigger. 150. Yes, 50. Okay. Are you able to see this? Yes, sir. Energy flow in the ecosystem. Okay. So the first thing, one question which comes, how do you can write this down? How does energy flow affect the laws of thermodynamics? Or the question can be that how the laws of thermodynamics control the energy flow in ecosystem. सर फर्स्ट क्वेश्चन फिर से बोलिए ना. First question छोड़ो, second question ही आ जाए. How does the laws of thermodynamics control the energy flow in ecosystem? Written it? यस सर. Okay, okay. জ্যোতি লিখেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা. So first thing is energy is defined as the ability to do work. So energy is the ability to do work, and work can be defined differently in biology and in physics. Okay, so work, there has to be some displacement according to physics, but according to biology you don't need a displacement. And the thing which actually the ability which makes work is energy. And so the first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. Everybody knows it. Energy can neither be created nor destroyed. So this is the law of conservation of energy. But one form of energy can be transformed into another. In fact, this can be changed through the Einstein's law of relativity. That is E is equal to mc squared. So energy and mass, there is a relationship between energy and mass. They can be interconverted. Mass can be converted into energy, and energy can be converted back to mass. So there is a relationship. E is equal to mc square. E is equal to the energy, and m is the mass, and c is the speed of light, square of the speed of light. So this is the law of the relativity. So this relates actually energy and mass together, matter. So law of conservation energy is something different. It says that one form of energy can be converted into another, and energy can neither be created nor destroyed. This is the first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics, it is also known as the law of entropy. This says that no process involving energy transformation will spontaneously occur unless there is a degradation of energy from a concentrated to dispersed form. So this says that no process where energy is transformed from one form to the other form will occur until or unless
energy from a concentrated form in one place is dispersed to a diffused form. So, for example, you have this hot tea, and the heat is concentrated inside this teacup. And so, if you what happens if you place your hand near the teacup, you'll feel warm. So, what happens from this concentrated source? This energy is going out into a dispersed form. So, this heat energy is going out. Okay, বুঝতে পারলে তো? Basically, this is the entropy. হ্যাঁ So, স্যার। entropy is the measure of the unavailable energy resulting from transformation. So, when a transformation takes place, when, say, for example, you are eating carrots, you will get energy in your body. You will get some energy, but 100% energy will not go to your body. There is some part of that energy. Matlab, you take 1 gram of carrot, that doesn't mean you'll get 1 gram of muscle or energy to do work. Only out of 1 gram, you'll have 1/10 of that being utilized. And the rest is lost as body heat. Body ke heat se it's going out. Tumhara temperature बढ़ जाएगा. It goes out as heat. So this is because of this entropy, it is going out. So it is a measure. So in an ecosystem, if you see the first law, the energy is transformed from one form to another. Sunlight is stored as carbohydrates and glucose energy inside plants. But not all sunlight is captured by this plant. Only a little, very, very little percentage of energy is captured. The rest is bahar ka aaj ka temperature is very high. Outside temperature is high because maximum all our plants are not capturing it. It is becoming warm. It is lost as heat. So this is how the first law of thermodynamics is controlling. The second law says that when one form is converted to another form, say the sunlight is converted into glucose, not all energy is being converted into glucose. Only a little bit of energy is converted to glucose. The rest is lost. So everything is not converted into food energy. Understand? Not everything. Pura the Roshni is not making your food. Is not making sugar by photosynthesis, but only a very small fraction. Rest is lost. और वहां से बाहर आ जाता है, तुम्हारे बॉडी से बाहर आ जाता है. Entropy, as per chemistry, is the randomness of an object. So if you boil water, what happens? Tug tug करना चालू करता ना, all the water molecules start moving. That is the entropy. The randomness of the things takes place. Gradually जब ठंडा हो जाता है, entropy कम हो जाता है, order state में water ice बन जाता है. So that is, in ice the entropy is the least, and in boiling water entropy is the maximum for water. Entropy for water. So this is where the solar energy is utilized. So three components hota hai: visible light, ultraviolet light, and infrared radiations, sunlight. So very little amount is converted. So now we come to the concept of productivity. I'm sure there will be a question from it. So how do you define productivity? Productivity of an ecosystem refers to the rate of production, that is the amount of organic matter accumulated in unit time. An ecosystem, how much it is producing organic matter. Because from the sunlight and components of the soil, you are having plants. So कितना sunlight में कितना plant बन रहा है, plant का weight बढ़ रहा है. So this is in that ecosystem, how much it is increasing. And so that can be defined. The first thing is primary productivity. It is associated with producers, which are autotrophic, matlab plants. They are photosynthetic, and these are green plants. So it is defined as the rate at which radiant energy is stored by photosynthetic and chemosynthetic activity of producers.
सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? इट इज द रेट. रेट मीन्स कितना बन रहा है कितना यूनिट टाइम में. सो रेट, वेन एवर यू टॉक अबाउट रेट, you have first one component of time is there. In this fixed amount of time, say 1 hour, how much mass, how much sunlight is stored as food energy. So this is actually what is primary productivity. समझ में आया what is primary productivity? Yes, sir. ओके. है सर, आस्ते क्या 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 क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट इज द, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो it is the rate of primary productivity is you will have that as amount of CO2 fixed per gram chlorophyll per hour. So primary gross primary productivity is, yeah, amount of carbon dioxide. This carbon dioxide, with the help of sunlight, it is getting converted into sugar through photosynthesis. So amount of carbon dioxide fixed, it is the total, मतलब it is total कितना बना रहा है. It is something like my salary is 92,000 rupees per month. फिक्टिशियस अमाउंट बोल रहा हूँ. इट इज 92,000 पर मंथ. लेकिन उसमें से मेरा क्या 92,000 बैंक बैलेंस में जम रहा है? नो. क्या आई विल स्पेंड ऑन फूड, आई विल स्पेंड ऑन मार्केट, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल दीज थिंग्स, एंड अल्टीमेटली आई विल हैव ओनली say rupees 10,000 left. The rest has been spent. Income tax, PPF, everything that they will all investments, taking all, I'll have only maybe say 10,000 rupees left. So the in gross primary productivity, it is my whole salary, that is 92,000 rupees per month. That is my gross earning or gross primary productivity. And net primary productivity is, it is the utilization by plant. So the plant uses for its own living, it will utilize a part of that energy for itself. हाँ, it will utilize a part of this energy for itself. And सब कुछ खर्च करने के बाद, the amount which is left behind, that is the net primary productivity. Clear? Yes, sir. Okay. Now we come to secondary productivity. This actually secondary productivity is nothing productivity. This refers to the consumers or heterotrophs. मतलब जो प्लांट्स को खाता है, बकरा या कोई गाय, बकरी, ये सब, ऑल दीज, गोरू भेड़ा, all these things. So these are the rates of energy storage at consumer levels. So these consumers only utilize food materials already produced in their respiration, simply converting the food matter into different tissues. So Odam actually likes to use the term assimilation instead of production for secondary productivity. It is the amount of food matter stored in heterotrophs, in animals, say for example, in different tissues. So plant product is converted into animal product in animal tissues, usko खा के. And net productivity of an, because the ecosystem is with plants and animals and abiotic factors, sunlight, minerals, soil, everything, सब कुछ लेके you have the ecosystem. So what is the net productivity of the ecosystem? Say for example, net productivity is amount in a particular unit time. एक time होता है, say per day, amount which is remaining after plant has utilized it for itself, after the animals have eaten the plants, सब कुछ खाने के बाद, हाँ, घूस फूस सब देके सबको जो बचा हुआ है, and that is the net community productivity. And because of this net community productivity, you have increase in a size of an ecosystem. जितना बच रहा है, ये 10,000 रुपया ही मेरा फ्यूचर का सेविंग्स होगा, बाकी तो खर्च हो गया सब.
ये खा लिया, वो खा लिया, मैं खुद खा लिया। हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स इनकम टैक्स ले लिया मेरे से। हाँ, वो अपना पेट भरने के लिए मेरा पैसा ले लिया। फिर मार्केट वाला, मैं मुझे अपना खाना के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ा। सब कुछ लेने के बाद जो पैसा बचा हुआ है मेरे बैंक में, दैट इज माई नेट प्रोडक्टिविटी। क्लियर? सो इफ यू सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, आर यू सीइंग दिस एरो मूविंग, ब्लैक एरो? Yes, sir. हाँ, so ये this tropical rainforest, say the area is 17 into 10 to the power 8 kilometer square, and net primary productivity, it is grams per square meter per year. So ग्राम, एक स्क्वायर मीटर एक एरिया में एक साल में कितना ग्राम? नॉर्मल इज 1000 to 3500 ग्राम होता है। इसका मीन रफली 2200 होता है। हाँ, इतना बनता है। सो 2002 किलोस पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, एक साल में। हाँ, एक स्क्वायर मीटर एरिया में। हाँ, एक से मेरा टाइल का एरिया होता है 1 मीटर, इतना होता है। हाँ, सो 1 स्क्वायर मीटर मतलब इतना एरिया, उसमें एक साल में 2200 ग्राम बनता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इतना प्लांट प्रोडक्ट बनता है। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में वो इट इज समथिंग लाइक 1600। सो टोटल कितना एरिया होता है? 17 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर। So now we talk about another term known as energy subsidy. So high rates of primary production in both natural and cultivated ecosystem occur when physical factors such as water, nutrients, and climates are favorable, and especially when energy from outside the system reduces the maintenance cost. Any other secondary or auxiliary energy that supplements the sun and allows the plants to store and pass more photosynthesis is termed as auxiliary energy flow or energy subsidy. So let me tell you what happens in a prior auxiliary energy, matlab bahar se auxiliary, primary auxiliary energy is the sunlight which is coming into the ecosystem. उसके बाहर में से फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग सम, ये बल्ब के लाइट दे रहे हो टू अ प्लांट। हाँ, that is secondary or auxiliary energy. It supplements the sun's का primary auxiliary energy. Wind and rain in a rainforest, tidal energy in an estuary, fossil fuel used in the cultivation of crops are example of energy subsidies. So, for ये tractor में you are putting in power, in tractor you are putting in petrol and you are plowing it on the field, and this causes the plants to grow much better. So you are giving additional energy from fossil fuels, and so that will increase the yield. So this is known as energy subsidy. समझे ना? Understand? Yes, sir. Okay. Now let us go to this models in ecosystem. So the first is, this is known as Lindemann's model. इसको बड़ा करता हूं. Lindemann's model. So this is the energy flow. It is sometimes known as single channel. So energy flow ecosystem for a lake. So Lindemann, he measured एक lake से, he measured this particular data, and units is in grams, gram calories per centimeter square per year. कितना, we are talking in terms of 1 ग्राम से कितना कैलोरी मिलता है, कैलोरी में कन्वर्ट किया 1 ग्राम, उसको बर्न करने में कितना कैलोरी रिलीज, सो दैट इज एज ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर ईयर it is used. So solar energy 118
118,872 gram calories per centimeter per square. That much amount of energy comes. It comes to autotrophs, मतलब plants. Gross production इसका उसमें इतना आ रहा है, you get only 111 gram calories per centimeter per square per year. इतना लॉस हो गया. डिकम्पोजिशन मतलब सड़ जाता है कितना, 3 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर. उसको नॉट यूटिलाइज्ड, इसमें से यूज नहीं होता है 70. प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन में 23 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर खर्च कर देता है. नाउ हार्बीवोर्स खा लेता है, उसमें से 111 से आ गया 15, ऑलमोस्ट 10% हो गया. तो हार्बीवोर्स से डिकम्पोजिशन हो गया, मर जाता है, वो खराब हो जाता है खाना, तो 0.5 चला गया. कार्ने फिर नॉट यूटिलाइज 7, अपने रेस्पिरेशन में 4.5 ले लिया. एंड फिर इट गोज टू द कार्निवोर्स, मतलब जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, मीट खाने वाले. हाँ, एंड सो बहुत कम डिकम्पोजिशन में जाता है. नॉट यूटिलाइज्ड 1.2 रहता है, रेस्पिरेशन में 1.8 रहता है. एंड देखो 15 से इसका भी 10, ऑलमोस्ट लाइक 10% हो जाता है कार्निवोर्स ग्रोस प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम. तो ऊपर से दिस इज अ सिंगल चैनल, देखो एक ही चैनल से आ रहा है, ऊपर से 1 2 3 4 5, मतलब सीधा एक चैनल से जा रहा है. दिस इज नोन एज सिंगल चैनल. समझ में आया ये? This is a Yes, sir. this is single channel energy flow, linear energy flow. Now we talk about a Y channel, or next one है Y or double channel energy flow. सर लिंडरमैन्स वाला मॉडल जो है सिर्फ ऊपर वाला ही ड्रॉ करना पड़ेगा. हाँ आप हाँ क्वेश्चन एक लिखाए थे. हाँ, ये वाला ही इजी है, यही वाला याद रख पाओगे. ये वाला उसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन मुझे ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसीलिए इसको मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये वाला करने के लिए. और सर इसका मॉडल के बारे में कुछ लिखना भी होगा. हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन एन यूनिडायरेक्शनल मैनर. ये वाला, ये पार्ट लिखना है. और सर उसके नीचे में जो है लीनियर मॉडल, ये वाला नहीं सर, ये लेफ्ट में लिखा हुआ जो है सिंगल आ, चैनल एनर्जी, हाँ हाँ हाँ, ये तो लिखना पड़ेगा, लीनियर वो भी मॉडल लिखना एनर्जी. पड़ेगा. हाँ हाँ, इसको ओके इसको एक्सप्लेन करके ये तो लिखना पड़ेगा. सर. ओके हम्म. सर. अब ये पिक्चर है वाई शेप या डबल चैनल वाला. मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा. और नाउ इसमें क्या होता है, इन द वाइट चैनल, सिंगल चैनल में क्या हुआ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अन सेकेंड फूड चेन. हाँ, ये सिंगल चैनल में क्या, सनलाइट प्लांट में गया, प्लांट से गया, इट गोज टू द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से इट गोज टू द प्रेडेटर्स. ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन. ठीक है, सनलाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय ग्रास, ग्रास ईटन बाय डियर, डियर ईटन बाय लायन. ठीक है, दिस इज नोन एज अ ग्रेजिंग फूड चेन. अब एंड दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिख रहा है ये लाइन यहाँ पे, दिस पार्ट, यस सर. स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन करके, ये लाइन दिख रहा है. हेलो, यस सर, दिख रहा हाँ दिख रहा है ना. तो दिस लाइन इज नोन एज सिंक. सिंक मतलब जो वेस्ट इकोसिस्टम में दान कर दिया. प्लांट्स का भी ये सिंक है. प्रेडेटर का मतलब वो सिंक है. बट वी डोंट कंसिडर ये, जब व्हेन दिस प्लांट्स मर जाते हैं, सड़ता है ना, एनिमल्स भी मर जाता है तो सड़ता है, या कवर देता है तो सड़ता है, तो बेसिकली अंडर द सॉइल यू हैव दिस डेट्रिटस, दैट इज नोन एज डेट्रिटस. सो डेट्रिटस का कंज्यूमर होता है स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, ये जो माइट, बग्स, ये सब वर्म्स, ये सब डेड बॉडीज को खाते हैं. हाँ, तो ये लोग खाते हैं. सो दिस इज एक्चुअली
taken, এই আস্তে পড়াচ্ছি, আমি পড়াচ্ছি, একটু আস্তে শুনতে, এক সেকেন্ড পড়াচ্ছি আমি। আচ্ছা, detritus. So this detritus basically is ये सड़ाता है। So these herbivores, इसको भी प्रेडेटर खा लेता है, मतलब ये बग्स को भी, इसको भी खाने वाला प्रेडेटर रहता है नीचे में। तो ये सड़ने वाला जो चीज है, दिस इज द डेट्रिटस। सो देखो एक वाई शेप्ड हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आके वाई के तरह ये ब्रांच हो गया। इसमें क्या हुआ, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन आ गया, 3000 से लेके यहां तक, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली, वाई शेप नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज बिकम वाई शेप्ड, दिस इज नोन द वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो। नाउ you have a universal energy flow model. So incident energy comes over here, इसको क्या जैसे है ऐसे ही लिख देना है, समझ में कुछ नहीं है इसमें, इसमें इस ऐसे करके ड्रॉ करके ऐसे बनाना है, दोनों को मिला के सब कुछ लेके एक फ्यूज करके दे हैव मेड दिस मॉडल। सर क्या क्वेश्चन बोले? एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, तुमको सिर्फ इसको पिक्चर को देना है और इसको पूरा लिख देना है बस। और सर वाई शेप्ड वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? वाई शेप भी इंपॉर्टेंट है, ये वाई शेप का राइटिंग है यहाँ पे, ओके तुम्हारा सर। पूरा सब तीनों मॉडल इंपॉर्टेंट है। फोटो ये वाला फोटो देना, ये वाला फोटो प्रैक्टिस करना, और ये वाला तो करना ही है, समझे ना। ओके सर। सो एक है 10% रूल जो होता है, हाँ, से अगर यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 से मतलब एट ईच स्टेप, हाँ, सनलाइट से प्लांट, प्लांट से डियर, डियर से लायन जो आता है, 90% लॉस्ट मोस्टली एज हीट, सिर्फ 10% पास कर ले। सो पीपल कॉल दिस एज लिंडनबर्ग्स 10% लॉ। समझ में आ गया ये, दिस इज एनर्जी फ्लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 100 कैलोरीज रहता है तो बियर में जाता है सिर्फ उसका 10 कैलोरीज, 90% लॉस्ट हो जाता है। फिर बियर से जब वो लायन में जाता है सिर्फ 10 से 1 हो जाता है। तो उसके मतलब ये है कि तुमको एक्चुअली एक प्रेडेटर का 1 कैलोरी मिलने के लिए इसको 100 कैलोरीज का रफली प्लांट्स खाना पड़ता है। বুঝতে পেরেছো এনার্জি ফ্লো? হ্যাঁ স্যার। ये वाला आज ही पढ़ लेना, क्वेश्चन है तो पूछना, अगर अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। ओके सर। क्वेश्चन है इसमें? नो सर। ओके, ओके। नेक्स्ट डे ये नेक्स्ट डे मैं एक टैक्सोनॉमी का पार्ट डील करूंगा, ठीक है, टैक्सोनॉमी का जो जो पार्ट हुआ नहीं ओके है। सर जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे कि हाउ डज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल, तो जो वो फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट, पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ाए वाला थे, पार्ट, फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा नोट का। इंट्रोपी पूरा लिखना पड़ेगा सर? हाँ, एंट्रोपी, फर्स्ट दो दो जो टॉपिक है, एंट्रोपी और सनलाइट, वो वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, वो लिख देना है। ओके सर। वो पहले बहुत ये क्वेश्चन आता था, बहुत दिन से दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन दे भी सकता है, अभी न्यू सिलेबस है ना, यस सर। दे भी सकता है, सो यू डोंट नो। और ओके सर देन, जो आप हाँ हाँ, क्वेश्चन लिखवाए थे ना, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिला, क्योंकि नोट्स में ना कुछ कुछ का आंसर नहीं है। इंटरनेट में ढूंढ के लाओ, मुझे दिखाओ, इंटरनेट में तो सब कुछ है, जी सर, इंटरनेट में तो है। सब कुछ है, वो उसको ढूंढ के लिखा, मेरे पास मेरा ये सब मेरे नो दूसरे चीज जगह पे भी होगा, वो तो दे ही सकता हूँ। हाँ, वो बुक से ही तो मैं क्वेश्चन बनाया, तो बुक में ही है वो, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो एग्जाम के टाइम में परेशानी कम होगा। ओके सर। ओके, वेडनेसडे को मिलते हैं, ठीक है।